नमस्कार। आज हम गुची मने की आत्मकथा पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, एक स्टडी गाइड भी है और जाहिर है उनकी ऑटोबायोग्राफी के कुछ हिस्से। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद है गुची मने के जीवन के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझना। मतलब उनके परिवार से लेकर उनकी मुश्किलें, संगीत, फिर वो कानूनी पचड़े और आखिरकार बदलाव की तरफ उनका सफर। ये कहानी काफी जटिल है। संघर्ष है, संगीत है, क्राइम है और फिर आत्म सुधार भी। सही कहा। और जो हमारे पास जानकारी है उससे पता चलता है कि कैसे उनके शुरुआती अनुभव, खासकर उनका परिवार और अटलांटा में बीते साल, उनकी पहचान और करियर के लिए बहुत जरूरी साबित हुए। अच्छा। उनके परदादा दादी 1915 में बर्मिंघम एलाबामा आए थे। पिता रैल्फ एक तरह के हसलर थे, जबकि माँ विकी काफी साधन संपन्न और पढ़ी लिखी थी। हालांकि उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी आसान नहीं थी, थोड़ी हिंसक रही थी। ओके। और एक दिलचस्प बात यह है कि रैल्फ को गुची माने नाम इटली में मिला था। ओह अच्छा। हाँ, फौज में थे वो तब, और अपने स्टाइलिश अंदाज की वजह से ये नाम मिला उन्हें। कमाल है। और फिर 1989 में अटलांटा आना, हाँ। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है उनकी कहानी में। हाँ बिल्कुल। बहुत कम उम्र में ही उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ा। पहले वो एल्यूमिनियम के डिब्बे वगैरह इकट्ठा करते थे और फिर धीरे धीरे ड्रग डीलिंग की तरफ चले गए। वो टेक्साको गैस स्टेशन का जिक्र भी मिलता है ना, जो उनके धंधे का एक तरह से सेंटर बन गया था। हाँ, वो एक अड्डा सा बन गया था। और 15 साल की उम्र तक तो घर के हालात, पिता की शराब की लत, इन सब चीजों ने मुश्किलें और बढ़ा दी। हाँ जाहिर है। अटलांटा की जो ड्रग संस्कृति थी उस वक्त और पैसों की तंगी, इसने उन्हें उस तरफ धकेला। फिर एक डकैती की घटना हुई उनके साथ, जिसके बाद उनका नजरिया बदला। वो ज्यादा कह सकते हैं आक्रामक हो गए। अच्छा, उस घटना के बाद? हाँ, और फिर बंदूक रखना उनके लिए जैसे अपनी सुरक्षा का एक तरीका बन गया। इसी बदलाव का प्रतीक था वो। तो इस सब के बीच, मतलब ड्रग्स, मुश्किलें, संगीत कैसे आया उनकी जिंदगी में? लगता है एक गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इसे एक ऑप्शन की तरह देखा। हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने जोन 6 क्लिक की सहस्थापना की। उनका फंडा क्लियर था, आत्मनिर्भर रहो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। हम सबसे पहले हसलर हैं। हसलर वाली सोच। बिल्कुल। उनका पहला हिट गाना था ब्लैक टी, और जेटोवेन के साथ उनकी जोड़ी बनी, वो काफी अहम रही। हाँ, जेटोवेन का नाम आता है बार बार। हाँ, उनका मकसद था कि उनका संगीत लोगों को प्रेरित करे, लेकिन साथ ही ये भी बताए कि वो उन्हीं में से एक हैं, उन्हीं हालातों से निकले हैं। मतलब संगीत एक तरह से उनकी सच्चाई भी दिखा रहा था और शायद उससे बाहर निकलने का रास्ता भी। वो हसलर वाली मानसिकता उनके गानों में भी झलकती होगी फिर तो। बिल्कुल। संगीत उनके लिए एक तरह का पलायन भी था और उनकी असलियत का आईना भी। वो चाहते थे कि लोग प्रेरित हो, पैसा कमाएं, मुश्किलों से लड़ें। लेकिन ये कानूनी मुश्किलें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही थी उनका। वो हत्या का आरोप, जिसे उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा में हुआ, वो एक बड़ा मोड़ था शायद। हाँ, वो बहुत बड़ा मामला था। फिर गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप लगे और 2014 में उन्होंने एक प्ली डील ली, जिसमें करीब 39 महीने की सजा हुई। और नशे की लत, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी ना? हाँ, नशे की लत से भी वो बहुत जूझे। बताते हैं कि रिकॉर्डिंग सेशंस के दौरान उनका बर्ताव काफी अजीब हो जाता था और वो रोज हजारों डॉलर्स ड्रग्स पर खर्च कर रहे थे। बाप रे। तो जेल में जो वक्त बीता उसका क्या असर हुआ उन पर? कुछ बदला? वो वक्त शायद आत्ममंथन का था। उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, संयम रखने की कोशिश की। अच्छा। एक अहम बात जो उन्होंने सीखी वो ये थी कि सिर्फ मैं ही हूँ जो असल में खुद को हरा सकता हूँ। जेल ने उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा लचीला बनाया, हार ना मानने वाला बनाया। तो मिक्स टेप रिलीज करते रहे पुरानी रिकॉर्डिंग्स से। हाँ बिल्कुल। वो अपना नाम बनाए रखना चाहते थे। पुरानी रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उन्होंने मिक्स टेप जारी रखे। और इसी दौरान उन्होंने मिगोज और यंग थग जैसे नए कलाकारों को मेंटर भी किया। हाँ, ये नाम तो बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। और ये वो कलाकार थे जिन्होंने गुची माने की गैर मौजूदगी में ही बड़ी सफलता हासिल की। और फिर जेल से बाहर आने के बाद क्या वाकई में उनमें कोई बदलाव दिखा? ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पक्का इरादा कर लिया था कि अब अपने व्यवहार को सुधारना है और पूरा ध्यान संगीत पर लगाना है। ये एक तरह से खुद को बदलना और अपनी कहानी को पूरी सच्चाई के साथ दुनिया के सामने रखने की कोशिश थी। प्रामाणिकता पर जोर था। तो कुल मिलाकर गुची माने की कहानी कई धागों से बुनी हुई लगती है। परिवार का असर है, हसल की वो कठोर दुनिया है, संगीत की दोहरी भूमिका है, एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ शायद बचाओ, फिर वो कानूनी पछड़ों का चक्र और अंत में बदलाव की एक इच्छा।
हाँ, और उनकी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने पे मजबूर करता है कि क्या किसी व्यक्ति का अतीत हमेशा उसके भविष्य को तय करता है, या क्या वाकई में प्रामाणिक बदलाव संभव है, इतना कि समाज की धारणाएं भी बदल जाएं? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद श्रोता खुद भी विचार कर सकते हैं। Welcome to the Deep Dive. This is where we take sources you suggest and really dig into them. Yeah, get right to the core of a topic. And today we're diving into the life, the music of Radric Davis, who, the world knows as Gucci Mane. That's right. And we've got some really interesting stuff to work with here. Personal notes, a briefing doc, and even excerpts from his own autobiography. Should give us a pretty full picture. Definitely. So our mission here really is to unpack what made Gucci Mane who he is, from his family history, those early days, right through his music career, and, well, the big personal changes he went through. Exactly, because when you just hear the name Gucci Mane, lots of things might spring to mind, right? Yeah, for sure. We want to go beyond those first impressions, really reveal the layers, the kind of surprising complexity behind the public figure. Okay, sounds good. Let's start at the beginning then. Family roots, early influences. Because it seems like there's this thread of ambition, maybe, running through his family history. Absolutely. It goes way back, actually. His great-grandparents moved to Alabama way back in 1915, looking for a better life, in coal and steel. Wow, 1915. Yeah. And it's interesting because you see this pattern early on trying to advance, overcome tough situations. It kind of echoes Gucci's own, relentless drive later on, despite all the setbacks. And that seems to carry on with his grandfather, James Dudley Sr. Right. He was a military veteran, then worked in education, postal service, a real commitment to, service and striving, building something solid. Then you get to his parents, Ralph and Vicki Jean Davis. Yeah. And it's a bit different. Yeah, a bit more complex. Ralph, his dad, is described as a hustler, involved in street life. And hustler here means resourceful, sort of operating outside the usual 9 to 5. Exactly. Resourceful, entrepreneurial, but often outside the mainstream economy. Then his mom, Vicki Jean, she came from a tough background herself, faced violence, but she was educated, resourceful, a strong figure. So you've got this mix of influences right there. And it directly impacted Gucci's birth, right? He was born in 80, took his mother's name. Yeah, because his father had legal troubles at the time. So right from the start, there's this instability. You have to wonder how that shaped him, that early need for independence maybe, how he saw authority. It seems like it really did leave a mark. The sources say his family's struggles, they deeply influenced his identity, his path. It's interesting though, he still talks about his father's good qualities, sees connections in their lives, family bonds, addiction. It's complicated. Then in 1989, the family moves to Atlanta. And that wasn't smooth sailing either. No, not at all. Big challenges right away. New place, money troubles, serious hurdles. And that pressure, that need to survive in a new city, it seems like that really sparked something in him, that self-reliance. You see it almost right away, don't you? With him starting to earn his own money. Collecting cans. Yeah, collecting cans. It's a humble start, but you can already see that hustle, that entrepreneurial thing kicking in. And that early resourcefulness. Well, it sets the stage for what comes next in Atlanta. The deeper involvement in the hustle. Right. Collecting cans was just step one. That need for survival, for some financial stability, it led him, as a teenager, into drug dealing. And there was a specific spot, right? The Texaco. Yeah, the Texaco gas station. Yeah. It became like the central spot for him and his friends. Their base for dealing during those years. It was key to their whole hustling experience back then. But getting involved like that obviously brings risks. Big risks. Oh, absolutely. It led to tension, confrontations with other groups like the East Shoals boys. Things got serious. And this period, it seems like he really started to understand the danger. There was a robbery incident. Yeah, that was pivotal. A robbery really shifted how he saw the whole game. It wasn't just about money anymore. It was about, staying safe, personal safety. So a moment of vulnerability makes him double down in a way. Kind of. It pushed him towards feeling he needed to protect himself, which led to him getting a gun. That's a significant shift, a real hardening, you could say. Definitely. But then, life throws another curveball. An arrest. And that seemed to be another turning point.
Made him think again about the street life, maybe consider something else, like music. Right. He even tried college briefly for Georgia Perimeter, but it didn't stick. Yeah, it doesn't sound like it was really about the academics for him. Maybe more about, I don't know, projecting an image. He apparently felt like an outsider there. So the traditional path wasn't clicking. Seems not, which leads right into him forming the Zone 6 clique. Okay, the Zone 6 clique. What was their whole philosophy? It was built on this core idea: self-sufficiency, independence in the music industry. And crucially, they funded their early music stuff with money from the streets. Ah, There's a quote in one source, something like, "The cornerstone was a pledge to be self-sufficient, independent artists. We took pride in being hustlers first and foremost." so real entrepreneurs, just in different arenas, controlling their own thing. Yeah. Exactly. Was it, pushing back against the established industry or just wanting control? Probably a bit of both. That desire for autonomy seems really strong. And his early music distribution was super direct, right? Like hand to hand. Incredibly direct. Selling his own CDs literally right alongside his drug dealing. It just shows that drive, that belief in what he was doing, even early on. And that hustle eventually paid off in the music world. That song Black Tea. Oh, Let me look yeah. at that. Black Tea. It was raw, direct, a response to Dem franchise boys' White Tea. And it just blew up his visibility in Atlanta, really put him on the map, established his sound. Why do you think it hit so hard? The realness? Yeah, I think so. The authenticity, maybe the directness, people connected with it. And producers were obviously key too. Zaytoven. Definitely. He worked with Diablo early on, but that partnership with Zaytoven, that was huge. He apparently bought a batch of beats from him for $1,000, and that connection really defined his early trap sound. It lasted a long time. And his goal with the music, it sounds like he was really tied to his own life, his own background. Yeah, he said it himself. Something like, "I wanted my music to inspire niggas to get money and come up, but also let them know I was one of them." So aspiration, but also connection, Yeah, solidarity. exactly, offering both. And then he even opened his own studio, Brick Factory, to keep control, manage costs. Yeah, Brick Factory. Super strategic move. It wasn't just about saving money or controlling his sound, though. It became this incubator, Right. He started bringing in other artists, mentoring them. Scooter, Young Dolph, Pee Wee Longway, and Migos. Wow, Migos too. Yeah, so he was already building something bigger than just himself, even back then, fostering talent. But while all this music stuff is taking off, the legal problems, they didn't go away. No, unfortunately. They were kind of a constant shadow. Like in 2005, right after his first album, Trap House, came out. And Trap House, that really cemented that early trap sound, right? Yeah. The gritty themes, the production. Absolutely. Defined a lot of it. But yeah, right after it drops, he gets arrested, murder charge. He got out on bond later, but still, a stark contrast. Success on one hand, serious trouble on the other. And it wasn't just legal trouble from the outside, right? There were internal struggles too. Substance abuse. Yeah, tragically. The sources talk about him spending thousands a day on drugs. It got really bad. Started affecting his work, his behavior in the studio. Erratic stuff. That suggests a really deep struggle, doesn't it? Yeah. Something often hidden behind the public image. Definitely highlights that vulnerability. And, well, it eventually led to more serious legal consequences. That federal charge in 2014. Right. Possession of a firearm by a convicted felon. Yep. And he ended up taking a plea deal, got sentenced to 39 months in prison. Okay, so prison. But it seems like that period, as hard as it must have been, it was also transformative. A time for reflection. It really seems that way. While he was inside, he apparently made a real conscious effort to change things. Focused on fitness, read a lot of self-help books, and had to deal with withdrawal, which must have been incredibly tough. There's that powerful quote, something about him learning he's the only one who can beat himself. Yeah. Gucci learns that he is the only one who can truly beat himself. No. Really emphasizes that idea of personal accountability, taking responsibility. That feels like a huge shift in thinking. Absolutely. And even while he was locked up, he was still strategic, still thinking about his career. How so? Releasing music from prison. Yeah, he had this huge backlog of unreleased recordings, right? So his team curated mixtapes from that material and kept releasing them. Smart. Kept his name out there. Kept him relevant. And he was still mentoring too. Guys like Migos, Young Thug, they were blowing up while he was inside, and he was still connected, offering guidance. So through all these ups and downs, the legal stuff, the personal struggles, the word that keeps coming up is resilience. It really is. His commitment to making music, collaborating, it never fully stopped, even in the worst times.
And that time in prison, however difficult, it really seems to have given him space to think, to reevaluate. And that led to real change when he got out. Seems so. When he was released in 2016, there was this clear determination to, do better, to focus on music in a more positive way. He seemed different, more grateful maybe. Talked about wanting to be a role model. Yeah, exactly. That briefing doc mentions themes like self-determination, accountability, and redemption. And those really seem to fit this later chapter. It's like he really understood that he was the one who had to change his own path. Precisely. He realized he held the power, the agency to make things different. A major turning point towards, growth and a different kind of future. Okay, so wrapping up this deep dive into Gucci Mane, Right. what are the big takeaways for you? Well, it's just a remarkable story, isn't it? You see how much his family, his roots shaped him, then the streets of Atlanta, that intense environment. Yeah. And just this undeniable passion for music driving him. And you can't ignore the legal challenges, the addiction struggles. They're a huge part of the narrative. Absolutely. But then running through it all is that resilience. And ultimately, this commitment to growth, to redemption, really. It's definitely a much richer, more complex story than you might think at first glance. For sure. From the family history, that spirit of overcoming things, to his hustle, both on the streets and in music, and then those periods of reflection in prison, there are surprising layers all the way through. Exactly. Lots of unexpected turns and insights. And for you listening, maybe Gucci Mane's story is a pretty compelling example of how resilient people can be. The potential for transformation, even when things look really bleak. Which brings us to maybe a final thought for you to chew on. When you look at everything we've talked about, the environment he came from, the choices he made, the way he reinvented himself, what does his journey ultimately tell us about those big forces? Environment, choice, the chance to start over. It's definitely something worth thinking more about. आज हम रैपर गुची माने की जिंदगी के एक ऐसे अहम बाप पर बात कर रहे हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है उनका कैद का जमाना और फिर उसके बाद की तब्दीलियां। जी हमारे पास कुछ आप कह लें जाती नोट्स हैं, कुछ सुवानी हिस्से, इंटरव्यूज। जी हाँ। तो इन सब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तजुर्बा था इसने गुची माने को, उनकी शख्सियत को, उनके करियर को कैसे बदला। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई जेल जाने आने की कहानी नहीं है। ये जो मवाद है ये दिखाता है कि ये तो खुद को पहचानने, जिम्मेदारी लेने और फिर एक नई शुरुआत करने का सफर था। सही। तो बात शुरू होती है 2014 से। गुची माने को सजा हुई। जी। वो गैर कानूनी असला रखने का केस था। हाँ, और सजा भी कोई कम नहीं थी, तकरीबन 39 महीने। 39 महीने, और ये उनके लिए यकीनन बहुत बहुत मुश्किल वक्त था। खासतौर पर शुरू के दिन वो मुंशियात छोड़ने का जो अमल होता है, विथड्रॉल। ओह हाँ। मवाद से भी यही लगता है कि वो बहुत ही निचले पॉइंट पे थे उस वक्त। जी हाँ, लेकिन अहम बात यह है, और ये उनके अपने बयानात और नोट से पता चलता है, कि इसी मुश्किल में कैद के अंदर उन्होंने फैसला किया कि बस अब खुद को बदलना है। ये बड़ी बात है, कैद में होते हुए। बिल्कुल, उन्होंने अपनी सेहत पर, मतलब जिस्मानी सेहत पर संजीदगी से काम शुरू किया, वजन कम किया, वर्जिश शुरू की। अच्छा। और ये भी जिक्र मिलता है कि काफी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी। एक जगह उन्होंने कहा भी कि उन्हें यह एहसास हुआ कि सिर्फ मैं खुद ही अपने आप को हरा सकता हूँ। वाह। ये जो सोच थी ना कि असल मसला बाहर नहीं अंदर है, यही तब्दीली की बुनियाद बनी। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये भी देखें कि कैद में थे लेकिन म्यूजिक सीन से गायब नहीं हुए। हाँ, ये कमाल है। उन्होंने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग से, जो रिलीज नहीं हुई थी, तकरीबन 25 मिक्स टेप्स जारी कर दी। 25? जी हाँ, मतलब फैंस को जोड़े रखा। ये तो जबरदस्त कारोबारी जहन लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ फैंस से जुड़े रहना नहीं था, असल में ये जाहिर करता है कि वो मुश्किल में भी कितने स्मार्ट बिजनेसमैन हैं। वो जानते थे कि अगर नजरों से हट गए तो कैरियर को कितना नुकसान होगा। सही। और साथ ही ये बात भी सामने आती है कि जेल से ही वो मिगोज और यंग थग जैसे जो नए लड़के आ रहे थे, अच्छा, उनकी रहनुमाई करते रहे, उनको गाइडेंस देते रहे। कैद से? जी, ये तो वाकई हैरानकुन है। जी, ये उनकी दूरअंदेशी थी, इंडस्ट्री पर अपनी गिरफ्त कायम रखने की कोशिश थी। और फिर 2016 में रिहाई हुई तो मंजर कैसा था? मवाद बताता है कि वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। जी बिल्कुल मुख्तलिफ, ज्यादा शुक्रगुजार, पुरसकून,
और एक रोल मॉडल बनने की कोशिश। ये तब्दीली सिर्फ बातों में नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके काम से भी नजर आई। आते ही उन्होंने खुद को म्यूजिक में पूरी तरह झोंक दिया। अपना वो मशहूर स्टूडियो ब्रिक फैक्ट्री, हाँ, ब्रिक फैक्ट्री, वो कायम किया। और उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि स्टूडियो के खर्चे कम हों, अच्छा, बल्कि बड़ा मकसद था नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना, अपनी फनी आज़ादी को यूं समझे महफूज करना। ये एक बिजनेसमैन के तौर पर उनकी मैच्योरिटी थी। सही। मवाद में उनके वालिद के साथ ताल्लुकात का भी कुछ जिक्र है। काफी पेचीदा रिश्ता लगता है। जी, कुछ पेचीदगियां थीं। ऐसा लगता है कि कैद की तन्हाई में उन्हें वक्त मिला सोचने का, अपने वालिद की जिंदगी, उनकी मुश्किलात, खास तौर पर नशे के हवाले से, और अपनी जिंदगी में मुमासलत देखने का मौका मिला। बिल्कुल। ये समझना कि आपके वालिदैन में या किसी भी इंसान में कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन उनमें अच्छाई भी होती है, ये बहुत गहरी समझ है। हाँ, इंटरव्यू से लगता है कि कैद के दौरान सोच विचार ने उन्हें शायद ज्यादा हमदर्द बनाया, माफ करने की तरफ माइल किया। तो अगर हम इन तमाम जराए को मिलाकर देखें तो खुलासा ये है कि गुची माने के लिए कैद का वक्त सिर्फ सजा काटना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से खुद को दोबारा बनाने का, सेहतयाब होने का, माजी की गलतियों को समझने का और मुस्तकबिल के लिए एक नया मुस्बत रास्ता बनाने का मौका बन गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इस सारे मावाद का जो निचोड़ है वो यही है कि अगर इंसान जिम्मेदारी ले ले और खुद को बेहतर बनाने का इरादा कर ले तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी तब्दीली ला सकते हैं। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक सवाल शायद ये छोड़ा जा सकता है कि जब कोई आर्टिस्ट इतनी बड़ी जाती तब्दीली से गुजरता है, इतनी मुश्किलात पर काबू पाता है, तो उसका असर क्या सिर्फ उसकी मौसीकी तक रहता है, या ये चीज उसकी पूरी शख्सियत को, उसकी लेगेसी को मौसीकी से हटकर भी एक नई गहरी जिहत देती है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੈਪਰ ਗੁਚੀ ਮੇਨ ਯਾਨੀ ਰਿਡਰਿਕ ਡੇਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਪਲ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਾ ਆਏ 89 'ਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 90 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨ 6 ਕਲਿੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੈਸਾ ਸੜਕੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਸਲ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਟੀ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਾ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। 2005 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਟਰੈਪ ਹਾਊਸ। ਟਰੈਪ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਲਬਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ
39 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਕੈਦ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਕਸਟੇਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਕਸਟੇਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਗੋਸ, ਯੰਗ ਥਗ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਚੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ, ਕਸਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ? ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ 2016 ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਲਣ ਲਈ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ।